तो द नेक्स्ट वीडियो फॉर एनवायरनमेंट, एक चीज रामसर साइट्स आगे के डिस्कस करने से पहले, जो इंडिया में रामसर साइट्स हैं उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज जो रह गई थी पिछले वाले में, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट कोरल्स, इज कोरल ब्लीचिंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कोरल्स हमने देखा, कोरल्स को जो ये कलर मिलता है दैट इज बिकॉज दे हैव दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ द जूजैंथिले एल्गे. पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट थ्रेट्स दैट दे फेस, द डिफरेंट स्ट्रेसेस दैट दे हैव टू अंडरगो, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर या लाइट चेंजेस सच एज changes in light availability or nutrient availability. So जो stress है, we saw that there were a lot of stresses that corals are having to go through, and इस टाइम पर what happens is that they break this symbiotic relationship that they have with the zooxanthellae algae. They expel the symbiotic algae zooxanthellae जो उनके tissues में live करती हैं. So this zooxanthellae algae live in their tissues and that relationship is broken, and when this relationship is broken it causes them to turn completely white. They derive their color from the algae. और जब ये algae expel हो जाता है और जब वो symbiotic relationship टूट जाता है, then it becomes white like you can see here. Right, so this is a healthy coral and this is a coral जहाँ पर coral bleaching हो चुका है, जहाँ पर zooxanthellae algae has been expelled. So continuing our discussion about the Ramsar sites in India, हम पहले पुराने वाले Ramsar sites डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डिस्कस कर लिया था up till Deepor Beel, right, in the previous video. तो वहां पर हमने देखा that some of the threatened birds that are there in Deepor Beel, which is a freshwater natural Ramsar site, वहां पर जो threatened birds हैं they are the greater adjutant stork. तो greater adjutant stork basically ये and Byers, and we saw this Byers pochard, okay, however it is pronounced, this one. ये याद रखिएगा कि ये जो बायर्स पोचार्ड है बेसिकली ये दिस हैज द IUCN status is critically endangered. So this Byers whatever the pronunciation, Byers pochard is critically endangered. ये important है. And ये भी याद रखिएगा डीपोर बिल में ये stork, this greater adjutant stork is found, and ये this one's IUCN status is endangered. So basically this is the greater adjutant stork and this is the Byers pochard. नेक्स्ट आता है हमारे लिस्ट में ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स जो वेस्ट बंगाल में है. तो यहाँ हम देखेंगे तो दिस इज द ईस्ट कोलकाता वेस्ट वेटलैंड्स. तो ये जो ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड है या ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है, इसकी खासियत ये है कि इट इज अ वर्ल्ड रिनाउंड मॉडल फॉर मल्टीपल यूज वेटलैंड. तो ये जो वेटलैंड है उसके मल्टीपल यूजेस हैं, क्योंकि ये एक अर्बन फैसिलिटी है यहाँ पर जहाँ पर सिटी का वाटर आता है और वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर. ठीक है, सो द वेस्ट वाटर कम्स एंड इट इज द ट्रीटमेंट. वहाँ पे देयर इज दिस फैसिलिटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. एंड देन उसके साथ साथ ये जो ट्रीटेड वाटर, जो वाटर ट्रीट होता है आफ्टर ट्रीटमेंट, दिस वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड इज आल्सो यूज्ड फॉर पिसिकल्चर. यानी कि पिसिकल्चर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स कमर्शियल ब्रीडिंग ऑफ फिश. फिश को जब कमर्शियल लेवल पर ग्रो किया जाता है, सो देन दैट इज पिसिकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है. सो दिस इज अ मल्टीपल यूज वेटलैंड. एक तो वहां पर इट्स एन फैसिलिटी जहाँ पर वाटर ट्रीट होता है एंड देन इट्स यूज, जो वाटर ट्रीटेड वाटर है दैट इज यूज फॉर पिसिकल्चर एंड एग्रीकल्चर. नेक्स्ट आता है द सुंदरबंस वेटलैंड. तो सुंदरबंस वेटलैंड वेस्ट बंगाल में है जैसा कि हमें पता है. एंड यहाँ देखिए, यहाँ पर सुंदरबंस अगर हम देखें सो इट्स हियर, राइट, सुंदरबंस वेटलैंड. तो ये जो सुंदरबंस वेटलैंड है, दिस इज लोकेटेड विद इन द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. इट इज लोकेटेड विद इन द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. एंड ये जो सुंदरबंस है, इट हैज a very significant population of tigers. This is the very important point. Ki this is the only mangrove. The Sundarbans are the only mangrove habitat which supports a significant population of tigers. It supports a significant population of tigers.
अब सुंदरबंस जो है it has hundreds of islands and maze of rivers, rivulets, creeks in the delta of the river Ganges and Brahmaputra on the Bay of Bengal in India and Bangladesh. ठीक है, so सिर्फ इंडिया में नहीं है, significant portion is also in Bangladesh, right? So the Sundarban Tiger Reserve is situated within the site. तो ये जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है that is situated within the Sundarbans wetland and it is a part of it and a part of this is declared as a critical tiger habitat. साथ ही साथ it also is a tiger conservation landscape of global importance. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है अपार्ट फ्रॉम दिस टाइगर पॉपुलेशन दैट इज द सुंदरबंस इज होम टू this northern river terrapin. This is a critically endangered species as per the IUCN. This is the northern river terrapin and also the fishing. It is home to the fishing cat. The fishing cat is endangered. Okay, the fishing cat is endangered. The Sundarbans is home to this and the Sundarbans is also home to the Irrawaddy dolphin जो हमने already देखा था चिलिका लेक में है, यहाँ पर भी है. So it is और ये इसका स्टेटस क्या है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस पर्टिकुलर इरावाडी डॉल्फिन? तो पहले इफ यू सी पहले के रिकॉर्ड्स के हिसाब से दिस इज वल्नरेबल बट करंटली द इरावाडी डॉल्फिन्स आर एंडेंजर्ड. ठीक है, इरावाडी डॉल्फिन्स की अगर हम बात करें सो Irrawaddy dolphins are actually under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. We will look at what the Wildlife Protection Act is लेटर, बट अभी के लिए ये याद रख लीजिएगा कि शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते हैं ये इरावाडी डॉल्फिन्स. IUCN में दे आर एंडेंजर्ड, IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से दे आर एंडेंजर्ड. ये दे आर बेसिकली फाउंड इन कोस्टल एरियाज इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन द 3 rivers. They are found in Irrawaddy, that's how they get the name. Irrawaddy River is in Myanmar, and then the Mahakam Indonesian Borneo river and the Mahakam river and the Mekong river in China. हमने चिलिका लेक में देखा था कि चिलिका लेक contains these Irrawaddy dolphins. चिलिका लेक की बात अगर हम करें so the concentrated lagoon populations are found in Chilika Lake in Odisha. And Chilika Lake के बारे में when we were discussing, there was one point which I forgot to mention was that Chilika is Asia's largest lagoon. Okay, and it is the world's second largest lagoon. So then comes Harike Lake. So you remember this? Okay, it is also ये Sundarbans है. Sundarbans is listed as World Heritage Site and also in UNESCO Biosphere Reserve. एक चीज याद रख लीजिएगा यहाँ पर ये तीनों चीजें याद रख लीजिएगा. ठीक है, इरावाडी डॉल्फिन, फिशिंग कैट एंड नॉर्दर्न रिवर टेरपिन सुंदरबन में मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स टाइगर्स. एंड यहाँ पे वल्नरेबल दिया है पर फिशिंग कैट का एक्चुअली करंट स्टेटस इज नॉट वल्नरेबल, इट इज एंडेंजर्ड. तो नेक्स्ट हरिके लेक अगर हम देखें तो यहाँ पर है, इट इज इन पंजाब. And if you observe it carefully, it is at the confluence of the Beas and Satluj rivers. So basically, Harike Lake एक man-made freshwater lake है. It is a shallow water reservoir with 13 islands at the confluence of 2 rivers, that is Beas and Satluj. ये याद रखिएगा कि the Indira Gandhi Canal starts from this place. Then just remember कंजली के बारे में कोई खास बहुत स्पीशीज वगैरह या कुछ नहीं है. कंजली जो है दैट इज अ मैन-मेड रिजर्वायर फ्रेश वाटर, पंजाब में है एंड इसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है बिकॉज इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी के साथ एसोसिएटेड है ये कंजली रिजर्वायर. बेसिकली कंजली रिजर्वायर इन द सेंस दैट ये जो देयर इज अ स्ट्रीम, ठीक है, इट इज ये एक मैन-मेड वेटलैंड है और वहां पे एक परमानेंट स्ट्रीम है काली बेन. अब ये जो काली बेन है दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द बियास रिवर. सो देन इसको कंसिडर किया जाता है, दिस हैज रिलीजियस सिग्निफिकेंस. एनी हाउ बस कंजली पंजाब याद रखिएगा, कंजली इज एसोसिएटेड विद पंजाब एंड इट हैज सम कनेक्शन विद श्री गुरु नानक देव जी बिकॉज दिस स्ट्रीम इज इम्पॉर्टेंट. सो जस्ट यहाँ पर कंजली वेटलैंड इज हियर, इट्स ऑल वेरी क्लोज बाय. ठीक है, एंड देन वी हैव दिस
रोपड़ which is also in Punjab. रोपड़ is a freshwater man-made lake in पंजाब में है. Basically यहाँ पे एक ही चीज ज्यादा याद रखने वाली है, ये है कि it contains the endangered Indian pangolin. Pangolin याद रखिएगा. Pangolin की अगर हम बात करें तो this is a thick basically this has scales on its body, and इसका जो IUCN स्टेटस है दैट इज endangered. तो एक पेक्यूलियर फीचर ये है पैंगोलिन का कि जब इसके ऊपर कोई थ्रेट आता है कि इफ इट इज टच्ड और ग्रैब्ड, इट विल रोल इटसेल्फ इनटू अ बॉल. पैंगोलिन. तो दिस इज हाउ अ पैंगोलिन विल रोल इटसेल्फ अप अगर उसके ऊपर कोई थ्रेट आता है. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी कैन रिमेंबर. अब पैंगोलिन इंडिया में अगर हम पैंगोलिन की बात करें, दिस इज अ सेपरेट थिंग, ऐसे इट्स रेलेवेंट अगर यहाँ हम बात कर लें इसके बारे में तो. सो पैंगोलिन एक्चुअली स्पीकिंग उसके 8 स्पीशीज होते हैं, बट इंडियन पैंगोलिन एंड चाइनीज पैंगोलिन, ये दो ऐसे पैंगोलिन हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं. इंडिया हैज इंडियन पैंगोलिन एंड चाइनीज पैंगोलिन ऑल्सो. इंडियन पैंगोलिन की बात अगर हम करें, दिस वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया widely. It is not found in the arid regions and high Himalayan and northeast regions, but it is distributed throughout India widely. And इसको बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में भी पाया जाता है. Chinese pangolin is found in the Himalayan foothills in eastern Nepal, Bhutan, northern India. Pangolins के ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि ये बेसिकली they are hunted and poached for local consumptive use as a source of protein and in traditional medicine and all of that, and international trade में for its meat and scales in mostly China and Vietnam. याद रखिएगा ये चीज. इंडियन पैंगोलिन, अगर हम इंडियन पैंगोलिन की बात करें तो द स्टेटस ऑफ द इंडियन पैंगोलिन इज एंडेंजर्ड. However, the status of the Chinese pangolin is critically endangered. Indian pangolin endangered, Chinese pangolin critically endangered. And both, the Indian pangolin as well as the Chinese pangolin, both of which are found in India, are listed in Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. और इसके अलावा कोई बहुत खास चीज याद रखने के लिए नहीं है रोपड़ के बारे में. बस हाँ, थोड़ा ये चीज है कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग प्लेस फॉर द नेशनली प्रोटेक्टेड स्मूथ इंडियन ऑटर, हॉक डियर, सांबर and several reptiles, and endangered Indian pangolin is also found over there. And this Satluj river hai. So basically this is a wetland of lake and river that was formed by the 1952 construction of the barrage for diversion of water from the Satluj river for drinking and irrigation supplies. Anyhow, next, Keoladeo National Park, very important because हमने देखा था कि इंडिया में दो मॉन्ट्रियक साइट्स हैं, उसमें से एक है कियोलाडियो नेशनल पार्क और एक है लोकटक लेक. तो ये याद रखिएगा कि कियोलाडियो नेशनल पार्क एक मॉन्ट्रे रिकॉर्ड साइट है. इट इज इन मॉन्ट्रे रिकॉर्ड सिंस 1990. क्यों मॉन्ट्रे रिकॉर्ड हमने देखा था? इट इज अ रिकॉर्ड जहां पर देयर इज अ सर्टेन, जहां पे ज्यादा अटेंशन की जरूरत है वैसे रामसर साइट्स को मॉन्ट्रे रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है. सो मॉन्ट्रे रिकॉर्ड सिंस 1990. इट इज इन मॉन्ट्रे रिकॉर्ड सिंस 1990 बिकॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज एंड अनबैलेंस्ड ग्रेजिंग रिजीम. तो बस यहाँ पर ये याद रखने वाली चीज है कि इट्स इन मॉन्ट्रे रिकॉर्ड एंड साइबेरियन क्रेन यहाँ पे पाया जाता है. एक और चीज है कि इट इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड यहाँ पर देयर आर आर्टिफिशियल एंड सीजनल लगून्स एंड एक इन्वेजिव स्पीशीज ऑफ एक इन्वेजिव ग्रास जो है यहाँ पर, जिसका एक कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, दैट हैज चेंज इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ द साइट. सो याद रखिएगा Keoladeo नेशनल पार्क राजस्थान में है. So here if you look, Keoladeo National Park is here. अब ये नेक्स्ट सांबार लेक सलाइन नेचुरल, इट इज इन राजस्थान. यहाँ पे इट वाज दिस सांबर लेक वाज इन न्यूज अराउंड इन ऑगस्ट टाइम बिकॉज एक एंड इट हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली ऑल्सो बिकॉज दिस according to certain studies the Sambar salt lake is constantly shrinking with the degradation of soil and water quality, and there is a decline in the population of migratory birds that has been seen recently. तो ये जो सांबर लेक है, this represents
This is basically in the depression of the Aravalli Range or the Aravalli Range. And the Sambar Lake is India's largest inland saline water body. Remember that it is India's largest inland saline water body. So ये जो Sambar Lake है, this receives water from 6 rivers. And the common sightings are flamingos are commonly sighted here, pelicans and waterfowls are commonly sighted here. कंसर्न्स की बात करें अगर सांबर लेक के बारे में, तो दिस इज सी 30% around 30% of the Sambar Lake area has been lost to mining and other activities. एक और इम्पॉर्टेंट चीज है ये इससे रिलेटेड, सांबर लेक से रिलेटेड, ये है कि जो वेटलैंड है दिस हैज डिक्रीज्ड वेयर एज वेजिटेशन कवर यहाँ पे हैज इंक्रीज्ड. एंड इससे ये एक प्रोमिनेंट चीज यहाँ पर सांबर लेक में ये थी कि देयर इज दिस प्रेजेंस ऑफ रेड एल्गे व्हिच इज द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. तो क्या हुआ है ओवर टाइम, दिस हैज लेड बिकॉज द वेटलैंड हैज reduced, it has led to the shortage of red algae and इसकी वजह से migratory birds को problem हो रहा था या हो रहा है. And एक और चीज, it was in news around in 2019 because क्या हुआ था, there was something known as avian botulism. So that time there was a death of more than 20,000 birds occurred, belonging to about 10 species that migrate annually to this lake, to the Sambar Lake, and that was the reason assigned was avian botulism. And avian botulism in Sambar Lake was बेसिकली एक तरीके, एवियन बोटुलिज्म की अगर हम बात करें तो एक इट्स अ न्यूरोमस्कुलर इलनेस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्टेन बैक्टीरिया. एंड ये बैक्टीरिया जो है इट इज कॉमनली फाउंड इन सॉइल, रिवर्स, सी वाटर एंड इट अफेक्ट्स बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. उस वजह से सांबर लेक वाज largely in news over the past few years. And also अपना इसका जो shrinking, ये जो also the concern that it is shrinking because of degradation of soil and water quality. So this is one reason. So we can have, ये एक चीज है सांबर लेक के बारे में. तो नेक्स्ट इज कोलेरू लेक. बेसिकली अब कोलेरू लेक की बात करें, इट्स अ फ्रेश वाटर नेचुरल लेक इन आंध्र प्रदेश. इट इज अ यूट्रोफिक लेक दैट इज सिचुएटेड बिटवीन द टू मेजर रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. रिमेंबर, कोलेरू लेक इज लोकेटेड बिटवीन द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स इन आंध्र प्रदेश, राइट. एंड यहाँ पर देखिए एक चीज है, it is known for this spot-billed pelican sighting. इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे अबाउट कोलेरू. ये एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम है अटापाका बर्ड सेंचुरी दैट इज पार्ट ऑफ कोलेरू लेक. ओके, सो इट इज एट कोलेरू लेक. एंड यहाँ पर ये अटापाका बर्ड सेंचुरी में there is a sighting generally of grey pelican and painted stork. तो ये याद रखिएगा, कोलेरू लेक में स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स साइटिंग के लिए इट इज नोन, राइट. देन लोकटक लेक, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट बिकॉज सी दो ही साइट्स हैं जो मॉन्ट्रे रिकॉर्ड में है, एक तो केवलाडियो नेशनल पार्क, एक है लोकटक लेक. मॉन्ट्रे रिकॉर्ड में सिंस 1993 दिस लेक हैज बीन देयर बिकॉज there have been ecological problems such as deforestation in the catchment area, infestation of water hyacinth, and pollution that has taken place. I've already told you what is water hyacinth, invasive species जब discuss कर रहे थे, right? So thick floating mats of weeds covered with soils. हाँ, एक बहुत important feature इसका ये है. So there are these floating mats of weeds in the lake that are known as fumids, and this is a very characteristic feature of the Loktak Lake. So this is actually not fumids, it's fumdis. Fumdis are a very characteristic feature. So they're thick floating mats of weeds. So इस तरीके की चीज होते हैं fumdis, and they are a series of floating islands that are very exclusive to this Loktak Lake in Manipur. Okay, and they cover a substantial part of the lake area, and they are basically heterogeneous masses of vegetation, soil and organic matters which are in different stages of decay. So this is very characteristic of the Loktak Lake. Okay, so actually if you see, this Loktak Lake is
is a very very large lake. The Loktak Lake is a large lake, and वहाँ पर it is famous for these fumdis. तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे फुमडीज हैं, और ऐसी ही एक फुमडी पर लोकेटेड है द केबुल लमजाओ नेशनल पार्क. ठीक है, तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड. So it is a refuge to this endangered sangai, which is the state animal. This is the sangai. If you have a look at it, and or the Manipur brow antlered deer. So remember this thing about the Loktak Lake कि Loktak Lake में एक फुमडी पर there is this fumdi, and over it there is the Kebul Lamjao National. Fine, and this is the only floating national park in the world. Then comes Nal Sarovar. Then आता है नाल सरोवर. देखिए ये सारी चीजें बहुत ही फैक्चुअल हैं. इफ पहले तो थोड़े कम रामसर साइट्स होते थे, तो वी कुड मार्क इट इन अ मैप एंड इट वुड बी इजी टू रिमेम्बर. बट अभी 47 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से हर रामसर साइट के बारे में रिमेम्बर करना पॉसिबल नहीं है. तो हम वी विल गो थ्रू इट वंस. वी शुड हैव एन आइडिया कि कहाँ पर कौन सा रामसर साइट है. कुछ प्रोमिनेंट रामसर साइट्स हैं पुराने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नए वाले में भी कुछ कुछ प्रोमिनेंट चीजें हैं जो हम देख लेंगे. But it is humanly impossible to remember each and every detail about each and every Ramsar site, given the number of Ramsar sites that we now have. 47 Ramsar sites, और हर एक Ramsar site के बारे में हर डिटेल याद करना पॉसिबल ही नहीं है. पर वी शुड हैव एन आइडिया कि हाँ, कि यहाँ पर क्या चीजें हैं जो प्रोमिनेंट हैं. कुछ ऐसे रामसर साइट्स हैं जो जिसके बहुत ही पेक्यूलियर फीचर्स हैं, जैसे लोकटक लेक एक मॉन्ट्रे साइट है, लाइक द कियोलाडियो नेशनल पार्क एक मॉन्ट्रे साइट है. लोकटक लेक में फुंडीज हैं. दिस इज द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज देयर, एंड सो सच थिंग्स, such features that stand out, we will try and keep in mind. एक ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा रामसर साइट किस स्टेट में है. ओके, सो नाउ कमिंग टू नाल सरोवर. वी सी इट्स इन गुजरात यहाँ पर. So this Nal Sarovar is in Gujarat, that we can remember. बाकी we'll just go through this once. ठीक है, the largest natural wetland in Thar Desert biogeographic province, and represents a dynamic environment with salinity and depth varying depending on rainfall. Okay, not that important. Now, it is an important stopover site within the Central Asia flyway with globally threatened species such as the critically endangered sociable lapwing. And the wetland is also a lifeline for a satellite population of the endangered Indian wild ass. Next, ये देखिए पॉइंट कैलिमरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी यहाँ पर है, राइट. Now about this Point Calimere Wildlife Sanctuary and Bird Sanctuary, these are coastal swamps and salt pans. ठीक है, यहाँ पर basically this is in Tamil Nadu. एक ये चीज याद रख लीजिएगा. एंड तो यहाँ पर एक कंसर्न ये है पॉइंट कैलिमरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी में कि यहाँ पर इलीगल कलेक्शन ऑफ फायरवुड होता है एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस सच एज फ्रूट्स दैट अकर्स. इसके अलावा एक और कंसर्न ये है कि देयर इज दिस स्प्रेड ऑफ दिस चिलियन मेस्किट, दैट इज प्रोसोपस चिलेंसिस. बेसिकली चिलियन मेस्किट से याद है. दिस इज अ काइंड ऑफ प्लांट. So this is this one, something like this. तो इसका जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा हो रहा है. दिस इज अ पोटेंशियल कॉज ऑफ कंसर्न. एंड साथ ही साथ ब्रैकिश ग्राउंड वाटर हो रहा है, बिकॉज सॉल्टी होते जा रहा है ग्राउंड वाटर बिकॉज ऑफ expansion of the historical salt works and decreasing inflow of fresh water. Fresh water ज्यादा inflow नहीं हो रहा है, salt work वहाँ पे बढ़ रहा है. And these are all seen as potential causes of concern. अब ये जो है ये पॉइंट कैलिमरे इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ लॉर्ड राम, सो देन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एज अ साइट ऑफ पिलग्रिमेज. देन हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन इज सस्थम कोट्टा लेक. द सस्थम कोट्टा लेक इज इन केरला. ठीक है, और दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला. केरला का सबसे ज्यादा
बड़ा फ्रेश वाटर लेक है. सो रिमेम्बर नेचुरल फ्रेश वाटर इन केरला, सस्थमकोटा लेक. अब यहाँ पर एक बहुत ही पेक्यूलियर चीज है, पर उससे पहले इसका लोकेशन देख लीजिए. यहाँ पर केरला में है, यहाँ पर सस्थमकोटा लेक. ये जो वाटर है इस लेक में वो बहुत ही प्योर है, क्योंकि यहाँ पर देर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ लार्वा दैट इज नोन एज कैवाबोरस. ठीक है, एंड ये कैवाबोरस क्या करता है, इट एलिमिनेट्स द बैक्टीरिया इन वाटर एंड दिस कंट्रीब्यूट्स टू द एक्सेप्शनल प्योरिटी ऑफ द वाटर दैट इज देयर. This water contains no common salts or other minerals and supports no water plants. But at the same time, it is because of this Cavaborous bacteria, it eliminates the bacteria that is there in water, and this water is pure. And ये जो ancient एक सस्था temple है यहाँ पर, it is an important pilgrimage center, and this is a source of drinking water for Kollam in Kerala. अब केरला के बैक वाटर्स के बारे में तो सबको ही पता है. सो दैट इज द वेम्बनाड कोल वेटलैंड है वहां पर. द वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरला, इट इज नेचुरल ब्रैकिश. So the largest brackish humid tropical wetland ecosystem on the southwest coast of India. एक important feature ये वेम्बनाड कोल का है कि it is the longest lake in India. इंडिया का सबसे लंबा लेक है वेम्बनाड कोल. ठीक है, so you can look at it here. ये है वेम्बनाड कोल. It is in Kerala. It is the longest lake of India. So it is basically famous for backwater tourism. उतना याद रखना काफी है. अच्छा, एक चीज यहाँ पर मेंशन करना आई फॉरगॉट. यहाँ पर जो पॉइंट कैलिमरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिसेंटली इट वाज आल्सो इन न्यूज बिकॉज वहां पर फ्लेमिंगोज जो है फ्लॉक हुए थे. लाइक फ्लेमिंगोज, a flock of flamingos, a video of a flock of flamingos went viral somewhere around the end of December last year. So this was in news for that reason. And इसी बात पर फ्लेमिंगोज के बारे में एक चीज जान लीजिए कि फ्लेमिंगो जो है, इंडिया में दो तरह के फ्लेमिंगोज पाए जाते हैं. एक है ग्रेटर फ्लेमिंगो एंड वन इज द लेसर फ्लेमिंगो. ठीक है, ग्रेटर फ्लेमिंगो वाइड स्प्रेड है इंडिया में, and they migrate to South India during winter and spend their time in large reservoirs and mudflats. इनका IUCN status least concern है. Lesser flamingo, on the other hand, mainly breed at the run of Kutch or the northwestern India, and इनका lesser flamingos का IUCN status not threatened है. They are not threatened. इंडिया का फर्स्ट एवर फ्लेमिंगो काउंट अंडरटेक करने की जिम्मेदारी ली थी द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने. इन 2019 they took up this responsibility. So that is something that just is good to know. So coming back to this, वेम्बनाड कोल हो गया, इसमें ज्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है. अच्छा, कुछ और चीजें हैं जो वेम्बनाड कोल के बारे में देख ही लेते हैं. तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें, इफ दिस इज आवर कोस्ट लाइन zoomed in of course, and this Vembanad coal जो है, this is a long lake, okay, something like this. and यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरेबियन सी है. तो बेसिकली ये जो वेम्बनाड कोल लेक है, दिस इज द बैक वाटर्स वाला लेक. सो बेसिकली दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द अरेबियन सी बाय अ नैरो बैरियर आइलैंड एंड इट इज अ पॉपुलर बैक वाटर स्ट्रेच ऑफ केरला, राइट. तो एक बैरियर आइलैंड से इट इज जस्ट सेपरेटेड. एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसको बुलाया जाता है एज द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस. ठीक है, द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस टेक्स प्लेस हियर, दैट इज आल्सो नोन एज वल्लम कली. तो हर साल ये रेस होता है यहाँ पर इन द मंथ ऑफ अगस्त इन वेम्बनाड लेक. एंड ये इंक्लूड हुआ था इन द रामसर, इट इज ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ द रामसर साइट. एंड ये सी इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है ये. रिमेंबर दैट इट इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट. फर्स्ट वन कौन सा है, सुंदरबंस. द फर्स्ट इज सुंदरबंस, सेकेंड लार्जेस्ट वन इज दिस वेम्बनाड कोल. एक और चीज जो नोट की जा सकती है वो ये है कि देयर इज दिस कुमारकोम बर्ड सैंक्चुरी. कुमारकोम बर्ड सैंक्चुरी इज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ दिस लेक. Then next, Ashtamudi Wetland. This is brackish natural again in Kerala. Ashtamudi Wetland. तो यहाँ पर हम अगर इसको मैप पे देखें तो this is the Ashtamudi Lake, right? This one here.
तो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है. इट्स एन एक्सटेंसिव एस्टुअरेंट सिस्टम एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन केरला. Okay, and the site supports a number of mangrove species. Next, quickly, Surinsar Mansar lakes, freshwater natural in Jammu and Kashmir. Bas, this is what we have to remember. Jammu and Kashmir mein hai ye, and we'll just go through this one. It is a composite lake in semi-arid Punjab plains adjoining the Jhelum Basin, with a catchment of sandy conglomeratic soil, boulders and pebbles. It is important for religious regions. So Surinsar Mansar, Jammu and Kashmir, one thing that you remember, and joining the Jhelum Basin is something we can keep in mind. Then Vular Lake, freshwater natural. Vular Lake. So Vular Lake is basically the largest freshwater lake in India. Jammu and Kashmir में है Vular Lake, and ये जो lake है, this is in fact one of the largest freshwater lakes in Asia. And the lake basin was formed as a result of the tectonic activity, and it is fed by which river? It is fed, remember, by Jhelum River. Vular Lake is fed by the Jhelum River. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है फ्लोटिंग वेजिटेशन में, दैट इज वाटर चेस्टनट. रिमेंबर दिस, वाटर चेस्टनट, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर पीपल ओवर देयर. तो यहाँ पर सुरिनसार मानसार अगर आपको दिख रहा होगा, सो दिस इज द वन, दिस इज द सुरिनसार मानसार. इट इज फेड बाय द झेलम रिवर. Sorry, it is adjoining the Jhelum Basin. It is adjoining the Jhelum Basin, and ये जो Vular Lake है, that is fed by the Jhelum River. Vular Lake is here, in the sense यहाँ पर. Then just Hokera Wetland, natural freshwater. बस यही याद रखने वाली चीज है. It is in Jammu and Kashmir again. So Hokera Wetland we can see here, Jammu and Kashmir. And this is the Hokera wetland में there is no there is nothing in particular that we have to remember, but ये हाँ Pir Panjal, it is located back of the Pir Panjal. Okay, next Somoriri. यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिया हुआ है पर लद्दाख में है actually, so it is in Ladakh currently. Somoriri, fresh water to brackish lake है, and यहाँ पर कुछ चीजें हैं that we can keep in mind. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर है सोमोरीरी के बारे में कि दिस इज द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड ऑफ चाइना फॉर वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड क्रेन्स, दैट इज द ब्लैक नेक्ड क्रेन. तो दिस इज द ब्लैक नेक्ड क्रेन इफ यू सी, एंड इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. ये ब्लैक नेक्ड क्रेन का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस ये है कि दिस इज अ बर्ड दैट इज रेवर्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ मोनपाज, द कम्युनिटी ऑफ मोनपाज. अब ये मोनपाज क्या है? मोनपाज इज एन एथनिक ग्रुप, द बुद्धिस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश का एक एथनिक ग्रुप है मोनपाज. So they revere this bird and they look at it as the embodiment of the 6th Dalai Lama. एक और चीज एडिशनली ये जान लीजिए कि मोनपास जो हैं दे आर बुद्धिस्ट हु फॉलो द महायाना सेक्ट. ठीक है, जस्ट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. IUCN स्टेटस जो है दैट इज नियर थ्रेटेंड. दे आर नियर थ्रेटेंड. IUCN रेड लिस्ट में दे आर नियर थ्रेटेंड. साइट्स में, द साइट्स में दे आर इन अपेंडिक्स 1. And Indian Wildlife Protection Act, the Wildlife Protection Act के Schedule 1 में है. We will see what is this Wildlife Protection Act a little later on. ये जो black necked crane है, basically इसका they are their habitat and breeding grounds are like, see, they are in high altitude wetlands of Tibet and certain regions of China and Ladakh. So and Bhutan, Arunachal Pradesh में भी they come during the winters. So यहाँ पर Somoriri में this site actually represents the only breeding ground outside China actually for the black-necked crane, and the only breeding ground for the bar-headed geese. Now this is the bar-headed goose, and ये दोनों ब्लैक नेक क्रेन एंड बार हेडेड गूस जो है याद रखिएगा सोमोरीरी से लद्दाख. अब भोज वेटलैंड है.
भोज wetland freshwater man-made मध्य प्रदेश में है. This is what we can remember. और उससे ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ remember करने के लिए नहीं है भोज wetland में. So if we go back to this, यहाँ पर है भोज wetland. You can see this one. Next comes the upper Ganga river. Freshwater. It is a stretch of the. It is a river stretch of the Ganga river. And Uttar Pradesh में है upper Ganga river. Freshwater. Again, this is a shallow river stretch of the Great Ganges with intermittent small stretches of deep water pools and reservoirs upstream from barrages. Okay, fine. The river provides habitat for the Ganges river dolphin, the gharial, the crocodile, 6 species of turtle, 82 species of fish, and more than 100 species of birds. So remember, these two are prominent. यहाँ पे Ganges river dolphin and gharial, upper Ganga river में, उत्तर प्रदेश, upper Ganga river, उत्तर प्रदेश. अब पुराने वालों में से लास्ट है रुद्र सागर लेक, फ्रेश वाटर नेचुरल, त्रिपुरा. So a lowland sedimentation reservoir in the northeast hills fed by 3 perennial streams discharging from river Gomti. बस रुद्र सागर लेक, remember Tripura. A beneficial exercise earlier जब रामसर sites कम होते थे, around 26 Ramsar, 27 Ramsar sites होते थे, तो that time it was easy to draw them in the map ताकि idea रहता था. But you can still do that. You can take a map and just make a just point, write down, mark where these Ramsar sites are, and then you just keep looking at the map again and again ताकि idea हो जाएगा कि कौन से state में कौन सा Ramsar site located है. हालांकि if you go through the names again and again in the state in which they belong, it will be there in mind. We will be in a position to eliminate options at least. But now there are 47 Ramsar sites. So so see, if you see here now there are 47 Ramsar sites. Now even if you make them in a map, it gets too crowded, and sometimes it's kind of difficult to really figure out which state में, especially जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, it becomes a little overcrowded if you really want to use the map. तो prominent ones जो हैं वो आप mark कर सकते हैं map में, या फिर आप एक टेबल बना लीजिए, वहाँ पर आप लिख लीजिए कि कौन से स्टेट में कौन सा है, और उसको बार बार just क्या कर सकते हैं, you can keep on looking at it. So it will stay in mind. Then a few other Ramsar sites which we'll just see कि कौन से स्टेट में है, एंड कुछ अगर important features है तो वो देख लेंगे. नंदुर मध्यमेश्वर. So this Nandur Madhyameshwar, we'll just keep in mind कि यहाँ पर it is a habitat of critically endangered species including the Deolali Minnau, which is a kind of fish, and Indian vulture and white-rumped vulture. Just we'll have an idea about that. Then there is Saman Bird Sanctuary. This is in Uttar Pradesh. Saman Bird Sanctuary. It's natural fresh water. And this hosts over 1% of the South Asian population of grey lag goose during winter. So this is very much factual. So there is nothing much to be discussed here apart from just looking at what the facts are related to this. So seasonal, ये जो Saman Bird Sanctuary है, ये seasonal oxbow lake है on the Ganges floodplain. Then there is Nawabganj Bird Sanctuary, again Uttar Pradesh. It is known to, important fact is, it is known to host Siberian cranes during winter. And Samaspur Bird Sanctuary, we'll just remember the State Association, Uttar Pradesh, natural fresh water. One thing we can keep in mind is it harbors the threatened species such as the endangered Egyptian vulture, the Pallas fish eagle, and vulnerable common. And also it also harbors the common pochard. Then there is this Sandi Bird Sanctuary, whatever the pronunciation, natural freshwater. It is in Uttar Pradesh. Remember the state association, we'll just keep in mind. बाकी वैसा कोई खास इसमें information नहीं है याद रखने लायक. It is an important bird area declared by BirdLife International. यहाँ पे the Saris crane is there, vulnerable. You can just keep that in mind. Common teal, red-crested pochard, and ferruginous duck. Alright, then there is this Parvati Agra Bird Sanctuary, State Association. We'll remember for these. The important ones we've already discussed, the older ones.
These are relatively the newer ones, and this is the Parvati Agra Bird Sanctuary in Uttar Pradesh, permanent freshwater environment consisting of two oxbow lakes. And it basically यहाँ पर एक चीज है कि there is this critically and the species यहाँ पे found are critically endangered white-rumped vulture, an Indian vulture, and the endangered Egyptian vulture. Then another one, Sarsai Nawar Jheel, that is freshwater natural Uttar Pradesh. So we see Uttar Pradesh में बहुत सारे हैं, and the thing we can remember, Sarsai Nawar Association, State Association. तो यहाँ पर एक दिस इज एन एग्जाम्पल सरसाई नावर झील में दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोहैबिटेशन ऑफ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ. बेसिकली यहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग द वाटर बर्ड हैबिटेट्स. And this is an important area recognized by the BirdLife International. Species यहाँ पर vulnerable Sarus crane, critically endangered white-rumped vulture, endangered woolly-necked stork. बियास कंजर्वेशन रिजर्व इन पंजाब. अब इस बियास कंजर्वेशन रिजर्व में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट दिस होस्ट्स द ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ द इंडस रिवर डॉल्फिन. ये जो इंडस रिवर डॉल्फिन है दिस इज बेसिकली एंडेंजर्ड. इट्स IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड. और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज ये हैं एंडेंजर्ड महासीर, हॉग डियर, as well as the vulnerable smooth-coated otter. यहाँ पर एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था that is to reintroduce the critically endangered घड़ियाल. So remember this घड़ियाल is critically endangered. So a little about the घड़ियाल्स. So this was in news recently because December के around news में था because ये जो डिपार्टमेंट है ऑफ पंजाब फॉरेस्ट and wildlife preservation in collaboration with the WWF India, that is the World Wildlife Fund for Nature in India, they released they released 24 gharials into the Bias Conservation Reserve. So into the Bias Conservation Reserve they released 24 gharials, and that is why it was in news. And the Gharial reintroduction in the Bias Conservation Reserve is a program of the Punjab government. So basically, if we talk about Gharials, then Gharials are generally distinguished by they have this long, thin snouts. They are a group of reptiles that have these long, thin snouts, and they have this they get this name from घड़ियाल. Basically it's like घड़ा, that इनके snout पे they have this rounded feature here. And very very importantly, the IUCN status of the घड़ियाल्स is critically endangered. They are critically endangered. इंडिया में तीन तरह के 3 species of crocodilians are found basically. That one is घड़ियाल, the second is mugger crocodile, and the third is the saltwater crocodile. The gharial is basically critically endangered. The mugger crocodile has the IUCN status of vulnerable, and the saltwater crocodile is currently least concern. हालांकि all the 3, gharial, mugger and saltwater crocodile, are listed in Appendix 1 of CITES and also in the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of 1972. हालांकि saltwater crocodile populations of countries like Australia, Indonesia and Papua New Guinea are included in Appendix 2 of CITES, but India mein they are in Appendix 1. The one thing about gharials is that their natural habitat is fresh waters of the northern part of India. Primarily, very importantly, they are found in the Chambal River. Okay, Chambal River mein they are primarily found, and Chambal, if you recall, is a tributary of Yamuna. Second habitat is the Ghagra River, the Gandak River, the Girva River in Uttar Pradesh, and some other small rivers, Son River in Bihar. The presence of the gharial basically is a good indicator of clean river water.
And next, quickly, Nangal Wildlife Sanctuary is in Punjab. It is located on the Shivalik foothills of Punjab and it occupies a human-made reservoir constructed as a part of the Bhakra Nangal project on the Satluj River. So it has a historic importance because in 1954, the Indian and Chinese prime ministers formalized the 5 principles of peaceful coexistence there. Then we have the Keshopur Miyani Community Reserve in Punjab. ये जो केशवपुर में यानी कम्युनिटी रिजर्व है, फ्रॉम द नेम कम्युनिटी रिजर्व, दिस इज अ गुड एग्जांपल of community managed wetland because it provides food for people and supports local biodiversity as well, because it has a series of managed fish ponds, cultivated crops such as lotus and chestnut grow here, and there are natural marshes, aquaculture ponds, agricultural wetlands that maintained by annual rainfall runoff. यहाँ पे species क्या है? Vulnerable common pochard and the endangered spotted pond turtle. Now there is the Sokar wetland complex in the Union Territory of Ladakh. This is basically mixed one lake saline, one fresh water. The Sokar basin is located in a high altitude wetland complex. And then यहाँ पर दो water bodies हैं basically, that is Stars Apuk So and Sokar. The Stars Apuk So is a freshwater lake and the Sokar is a hypersaline lake. Okay, the most important breeding areas of the black-necked cranes. We already saw the image of the black-necked crane. So this is a very important breeding area for the black-necked cranes. Then comes Lunar Lake. This is important. So Lunar Lake is saline and it was created by a meteorite impact. This is the important one. So this is a lake that was created by a meteorite impact, and यहाँ पर 1970s में scientists had confirmed the presence of a naturally occurring glass that can be formed only by extremely high velocity impacts. तो इसका मतलब इससे ये imply होता है कि this is a lake that was formed by the impact of a meteorite. So it was formed about 35,000 to 50,000 years ago. Lunar is the only fresh impact structure in basalt on Earth. So this is analogous to the impact craters on the surface of the moon. Lunar Lake is basically saline. Maharashtra में है, important, and it is saline and alkaline, and it is located in the Buldhana district in Maharashtra. It is situated inside the Deccan Plateau. So क्या हुआ था about a year ago, or more than a year ago, actually 2 years ago, this Lunar Lake had actually turned pink in color. So it turned pink in color, and that was attributed to increasing salinity. अब जब salinity वहाँ पर बढ़ गया था, because there was absence of rain and high temperature, so evaporation बढ़ गया, तो salinity बढ़ गया, and उससे हुआ क्या कि salinity बढ़ने से basically क्या हुआ वहाँ पे कि एक halophilic microbes started, it increased the growth, it facilitated the growth of halophilic microbes. Halophilic microbes are basically salt loving. In the sense, halophiles are a group of microorganisms which can often thrive in areas of high salt concentration. तो इसकी वजह से so this halophilic archaea produces a pink pigment, and that was how the lake had actually turned pink in color, like this. So the lake had become like this. So what we have to remember about this is that it was formed by a meteorite impact, the Lunar Lake. Then there is Sur Sarovar. Only important thing to remember is that it is in Uttar Pradesh. Then there is the Asan Conservation Reserve, freshwater natural in Uttarakhand. बस we'll just keep in mind कि यहाँ पर there is this red-headed vulture, उसका IUCN status critically endangered है, जो यहाँ पर spot किया जाता है. There is a white-rumped vulture, and this bites pochard. Okay, and then
There is this Kabartal wetland which is in Bihar. The state association remember कर लेंगे. So this one has 5 critically endangered species that inhabit the site, and then there are 3, of which there are 3 vultures, including the red-headed vulture, the white-rumped vulture, and the Indian vulture. And then there are 2 water birds, that is the sociable lapwing, and again the Byers pochard. Then there are a few others whose just state associations we will remember. So we'll once ek saath go through quickly the state associations. This has to be something that has to be revised again and again. So there is this Hyderpur wetland that is in Uttar Pradesh, Sultanpur. So these are Ramsar sites in India. Okay, 47 of them are there. So we'll just go through this. We'll take you through this. So Hyderpur wetland in Uttar Pradesh, Sultanpur National Park in Haryana. There is this Bhindawaz Wildlife Sanctuary in Haryana, the Thol Lake Wildlife Sanctuary in Gujarat, the Vadhwana wetland in Gujarat, the Ashtamudi wetland in Kerala, the Bias Conservation Reserve in Punjab, the Bhitarkanika mangroves in Odisha, the Bhoj wetlands in Madhya Pradesh, the Chandertal wetland in Himachal Pradesh, the Chilika Lake Odisha, Deepor Bill Assam, East Kolkata wetlands West Bengal, Harike wetlands Punjab, Hokera wetland Jammu and Kashmir, Kanjli wetland Punjab, Keoladio National Park, remember Montreux side, Rajasthan, Keshopur Miyani Community Reserve Punjab, Koleru Lake Andhra Pradesh, Loktak Lake Manipur, again Montreux side, and the Nal Sarovar Bird Sanctuary Gujarat, Nandur Madhameshwar Maharashtra, Nangal Wildlife Sanctuary in Punjab, the Nawabganj Bird Sanctuary in Uttar Pradesh, the Parvati Agra Bird Sanctuary in Uttar Pradesh, the Point Calamere Bird Sanctuary, Wildlife and Bird Sanctuary in Tamil Nadu, the Pongdang Lake in Himachal Pradesh, the Renuka Lake in Himachal Pradesh, the Ropar wetland in Punjab, the Rudrasagar Lake in Tripura, Saman Bird Sanctuary Uttar Pradesh, Samaspur Bird Sanctuary Uttar Pradesh, the Sambar Lake Rajasthan, Sandi Bird Sanctuary Uttar Pradesh, the Sarsai Nawar Jheel in Uttar Pradesh, the Sastham Kotta Lake Kerala, the Surinsar Mansar Lake Jammu and Kashmir, Somoriri Ladakh, Upper Ganga River Uttar Pradesh, the Vembanad Kol Kerala, Vular Lake Jammu and Kashmir, Sundarban Wetland West Bengal, Asan Barrage in Uttarakhand, Kanwar Lake or Kabal Tal in Bihar, Lunar Lake Maharashtra, Sur Sarovar Uttar Pradesh, and Sokar Wetland Complex in Ladakh. So these are way too many facts, but the important ones we have discussed. Important हो सकते थे, and we have seen those. So the important ones where a specific focus was needed that we have seen. So those facts that we have discussed, we'll try and keep in mind. Apart from that, just a rough idea about the states in which these Ramsar wetland sites belong is good. So this is a way too factual discussion basically, and there is no other way to go about it apart from just going through these facts as it is. So these are the Ramsar sites that we have discussed, and with this discussion, we'll continue the discussion in the next video. In this video, this is all, and this was a way too factual discussion because there are a lot of facts here involved. Especially when it comes to remembering the species, the important IUCN status of certain species, certain prominent species, and what is found where, and which Ramsar site is in which state. So then बाकी का इसके बाद continue करेंगे in the next one environment के लिए. So that's all for this one.